everyone, welcome back to my YouTube channel. Please do like, share and subscribe. So today was Sunday and we had a dental chair repairing done in our clinic. The technician had come to our clinic, so we wanted to get this thing repaired, but just because of lockdown this couldn't happen. So we wanted to get a dental chair servicing to be done. We wanted to get it done before the lockdown, but then lockdown happened and the process couldn't happen. So now when everything is sorted, we're getting this dental chair servicing done. We got a dental technician who's visiting to our clinic today. Let's see in this video how the dental chair is getting serviced and what all fault we have in this chair, what all need to be fixed and how will this happen. So let's see, and this video will definitely help to the new dental practitioners who can maintain their chair for a long period of time. बाहर मत लेना, अंदर ही। हाँ उसी जगह पे रखता हूँ जहाँ पहले। हाँ अंदर। हाँ पाइप ले लो तो अंदर से निकाल। सुबह अगर पोछा मारने वाली आ रही है तो शाम को उसमें पानी डाल के थोड़ा ठीक है।
को यूज करेंगे। ऐसे मारा मारा ये अगली बार फिर मार दे रहे 2-3 सेकंड सुपाइन को क्या लगा है? लोड आता है ना हाँ। ये करने को आगे लेते हैं उसका लोड कम रहता है मोटर सही है ऑयलिंग का क्या होता है? नहीं कर देंगे नहीं क्योंकि वो एक बार सुपाइन करो। करता है कि नहीं करता है? कितने का आएगा? ठीक है। और लाइट स्टेबल देख लेती हूँ एक बार मैं वगैरह। Hope this video will help. Thanks for watching. Please like,